नमस्कार। मैं प्रतीश कुमार खरे एक बार फिर आपसे बात करने के लिए हाजिर हूँ। और आज हम जो बातें करेंगे एंड इट विल बी ऑन द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इन शॉर्ट इट इज़ बीइंग कॉल्ड एज ए PPE, and it is very essential, and it is coming under the controlling of the hazards category as a third line defense. The first step in any accident prevention program is elimination of the various hazards at the time of the designing. If these were not possible, the next best step would be to control the physical, mechanical, and chemical hazards in the work environment by suitable engineering design. When this is also not possible, and also at the time when even ideal conditions are achieved, hazardous conditions are likely to be arise on account of sudden failure of equipment, machinery, or process. One has to fall back upon the third line of defense, and that is correct selection and proper use of personal protective equipment. At times, plants and machinery are taken up for scheduled preventive maintenance work. Under such circumstances, also, we are left with no other alternative but to depend upon this thin but highly effective third line of defense. It has also to be borne in mind that PPE do not and cannot eliminate or minimize a hazard. आप ये समझिए कि हमेशा आप दिमाग में रखिए, ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, PPE हैं, ये हैजार्ड्स को न कम कर सकते हैं न हटा सकते हैं. दे ऑल्सो कैन नॉट स्टॉप एन एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट रोक भी नहीं सकते हैं फ्रॉम टेकिंग प्लेस. These equipments merely set up a frail barrier against the hazards, thereby preventing or minimizing an injury. When your design is not supporting safety, I should say that way, that or the if you are in not a position to physical or mechanical or chemical elimination of the hazards during the design time of the equipment or the machinery, that this PP are playing the role. And this PP nowadays, if you see the cricket players, when they are going to play, they are having the PPs. And nowadays, helmet is very essential when you are driving the bikes or the two-wheeler. So these are the barrier between the hazard and they are preventing the injury. It is not necessary if you are using the any PP and injury will be prevented. No, it will minimize. It will not fully eliminate. The points for successful elimination of an effective personal protective equipments program is depend upon the some points that I will discuss one by one. First, the type of hazards to be faced. Second, determining the degree of protection needed. Third, selection of the right type of personal protective equipment to be used to protect the worker from the hazard. Fourth, ensuring ease and comfort with which they can be used. Fifth, ensuring freedom of movement with the equipment worn. Sixth, availability and accepted standard for material of construction of the equipment and their performance. Seventh, availability of the correct equipment in good condition at the work spot when required. Eighth, convincing the worker that the equipment used will be protect him from the hazard. Ninth, training of worker in using these equipments. 10th, making it a habit with the worker to use the equipment as and when necessary. And 11th, maintenance of these equipments. Some points I have discussed here, and it may be more. With your experience, you can add something, and you can add some more. But the last point is very essential: maintenance of these equipments.
with the experience, it has been observed that you have issued some equipments to the workers to use in the hazardous area. And when you are checking, what is the schedule of the check? When you are seeing that these equipments I have issued the 1 year back, it is in use or it is in the bad condition. Take the example of the safety belt. Person is going to work at height and he is using the safety belt. Have you checked the wear and tear? Are you having any schedule of the checks in the field, or you have guided to the workers or the user? I should say the worker. The person who is going in the hazardous area, he has to use the personal protective equipment. जो भी खतरनाक जगह पे काम करने जा रहा है और ऐसा ज़रूरत है कि वहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है, तो क्या आपने उसको बराबर ट्रेनिंग दी है, उसको समझाया है कि भाई इस यदि ये जो इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं तो मत यूज़ करिए। तो ये एक आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ओनली द इशू ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इट्स नॉट द कंप्लीट सेफ्टी। इट मीन दैट सिंपली यू आर enjoying by issuing the PPs and not interested to prevention of the accident. Only that you have thought, आपने सोचा कि हमने तो उसको पीपी प्रोवाइड कर दिया है, अब वो प्रोटेक्टेड है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो पीपी उसको प्रोवाइड किया है, किसको आपने वो रिकॉर्ड रखा हुआ है कि हमने इस व्यक्ति को ये वाला पीपी यूज दिया था ऑन दिस डेट? कभी आप उसको बुला के आपने उससे बात की? या फील्ड में जब आप हर चीज़ ऑफिस से मेंटेन नहीं हो सकती, आप फील्ड में जाके उससे बात कर सकते हैं, उसके इक्विपमेंट्स को चेक कर सकते हैं। अभी मैं जब था, हम लोग ने एक शेड्यूल, मैं जब जॉब में था तो मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ था कि जो भी जब हम फील्ड में जाएंगे तो हम वर्कर्स को बुला करके या जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है उससे पूछेंगे कि भैया ज़रा अपना ये पीपी ज़रा दिखाना है। जैसे हेलमेट ही देख लिया कि चिन स्ट्रैप बराबर है कि नहीं है, प्रोटेक्टिंग जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं, वियर एंड टियर है क्या, वो ग्रूव ड्यू टू द डिटोरिएशन डैमेज तो नहीं हो गया है। या मैंने शुरू में ही बोला कि जैसे कि आपने बुलाया और उसको पूछा कि भाई जो हाइट पे काम कर रहा है नीचे बुलाया, नो नीचे क्यों बुला रहे, आप जाओ ऊपर, वो तो काम कर रहा है ऊपर, आप जाइए उससे बात कीजिए, उससे पूछिए कि भाई ये जो आप बेल्ट यूज़ कर रहे हो ज़रा मुझे देखना है कि इसकी क्या कंडीशन है। यदि कंडीशन ठीक नहीं है तो एक अच्छा सेफ्टी सिस्टम के लिए बेस्ट प्रोविज़न ये होगा कि आप उसको ये नहीं बोलिए कि जाके बदलो, आप उसको ये बोलिए कि भैया 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुमको दूसरा और अच्छा नया जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं ऐसा सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड करता हूँ, लोकेशन पे आप दे सकते हो उसको पीपी। वाई आर स्टॉपिंग द वर्क फॉर simple wear and tear in the personal protective equipment and say firing to the this user of the PP? तो बहुत एसेंशियल है कि ये जो आप थर्ड लाइन डिफेंस जो सिस्टम का है, जहाँ डिज़ाइन और उसका फिजिकल और मैकेनिकल केमिकल कंडीशंस के बावजूद भी आप जो पीपी प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी पीपी सही है कि नहीं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसके यूजेबल है कि नहीं। ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मेकिंग इट ए हैबिट विद द वर्कर टू यूज़ दैट इक्विपमेंट एज एंड व्हेन नेसेसरी। हमने एक्सपीरियंस किया कई बार, वर्कर जा रहा है काम करके और रास्ते में जा रहा है और आपने, कुछ लोगों की आदत थी, मैंने वो तो बड़ा अच्छा मुझे नहीं लगता था, मैंने सुना था कई लोग कार्ड ले लिए उसका, तुमने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अरे भाई मैं तो काम करके जा रहा हूँ अपने लंच शेड में लंच करने के लिए, तो इस प्रेशर से सेफ्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आइए आगे, दैट फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन पीपी। एज आई टोल्ड यू, माय टॉपिक, today's topic is the personal protective equipments. The personal protective equipments are generally divided into two broad groups. First is the non-respiratory and second is the respiratory.
At times, check apparatus, some of which are given here, also included in these subjects since they help protect the worker. However, these are only listed here, which I am going to list and one by one. First, I am going to discuss about the non-respiratory personal protective equipments. The list are like that. These are the eye protection, for eye protection, face protection, ear protection, head protection, body protection, hand protection and the arms protection, foot and leg protection, and general protection. These are the coming under the category of the non-respiratory equipment. And further you can divide in the various, and some equipments I am going to share with you, like the eye and the face protection. Gas tight rubber goggles you are using, and mono goggles, sometimes cheapers goggles are coming, welders goggles are available. For the face protection, the face shield are being used, and PVC hood also being used, asbestos hood also is being used. Nowadays the asbestos is banned. This another hood has come when they are going to do the blasting, grid blasting on that. In this we'll go for the various, when you are selecting the goggles, you have to see the what type goggles has to be provided to the workers. वर्कर को जो आप जब भी कोई भी नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको किस काम के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए हम दे रहे हैं. अब वो वेल्डिंग करने जा रहा है तो वो नॉर्मल गॉगल्स है तो वेल्डिंग नहीं कर सकता, तो आपको जो उसका जो रिक्वायर्ड गॉगल है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा. ऐसे ईयर प्रोटेक्शन के लिए आपको ईयर प्लग, ईयर मफ देना पड़ेगा, और हेड प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी हेलमेट्स देने पड़ेंगे. तो ये हैं सब इक्विपमेंट्स, और अलग अलग जो ये इक्विपमेंट्स हैं उनका अलग IS कोड भी है, तो उसके हिसाब से उसकी परचेजिंग करनी है. और जो ईयर प्लग कहाँ पे यूज़ करना है, ईयर मफ कहाँ पे यूज़ करना है, ये भी आपको बताना पड़ेगा उसको. And the safety helmet provide very good protection to the head from the injury by falling bodies, flying objects, overhead spills, or hot and the corrosive chemicals, electric shock, etc. And further फिर नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट में आप जाएंगे बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, तो एप्रन्स हैं, सूट्स हैं, कोट्स हैं. हैंड प्रोटेक्शन के लिए अभी आप जाएंगे तो ग्लव्स हैं, और डिफरेंट टाइप्स के ग्लव्स आते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर. फिर केमिकल एरिया में यदि आप काम करते हो, बैरियर क्रीम्स आती हैं. लेग प्रोटेक्शन के लिए शूज़, और जो टो प्रोटेक्शन के लिए उसमें प्रोविज़न होना चाहिए. और फिर जनरल प्रोटेक्शन में आप बात करेंगे तो देन यू विल सी दैट सेफ्टी बेल्ट with the lifeline is must when you are working at height. And if you are going for the respiratory protective equipment, whether the contaminants take the form of dust, nuisance, irritant, toxic, poisonous, gaseous, smoke, fumes, mist, etc., proper respiratory protective equipments are available and are designed to provide the adequate protection. The restrictions on use of the respiratory protective equipment. These devices should normally be restricted to intermittent exposure or to exposure that are impossible to control by other methods. These have the following disadvantages. They do nothing to reduce, eliminate the hazard. In the beginning, I have told you that any PPE is not eliminating the hazard. It is a barrier. It is being called as a third line defense. And when you are using it before going in the area, that person has to be very cautious. The selection of proper respiratory protective devices, we have to see the nature of the hazardous operation or process, type of contaminant and its properties, duration for which the protection will be, location of the hazard area, state of health and the person involved, functional and the physical characteristics and the limitations of the protective device available.
And further, if we'll go for the division in that classification of the respiratory protective equipments, the breathing apparatus is essential part of when you are going inside the any area which is confined area. Then you have to see, you have to select accordingly that what type breathing apparatus is required. It is a very vast science, I should say, when you are selecting the breathing apparatus, and you have to see the what type breathing apparatus I have to use. Generally it is coming the supplied air type and air purifying type. And further we will discuss for in other podcast and other time various type the respiratory equipments and the selection of the correct but I will tell you that respiratory protective equipment has to be properly maintained. That you should have the personal, especially for the PPEs. Generally, that you have to have the schedule of the inspection, cleaning, and disinfecting it. Repair is very I should say that particularly for the non-respiratory equipment, you can't do any repair. Don't believe that when you are repairing and using it, don't repair the non-respiratory, especially for the belts when you are using, or helmets, or what you can repair in the gloves. But breathing apparatus, respiratory side, the components are being checked and accordingly it is being changed also as per the requirement. But schedule has to be maintained for that. In this, in general, I have discussed in not in detail, I should say. It is only the eye-opener discussion, and further I know that who are the that going for this podcast and listening it, they are well knowledgeable person. Only I am triggering. I should say in general it is being called as a kickoff. So my all the discussion with you is for awakening. Sometimes something are missing. You are the best person and trying your level best to implement the safety in your area, no doubt. And gradually it is taking very good shape in India. So दोस्तों, आप सब लोग बहुत जानकार लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैंने ऐसी कोशिश की है कि आपके साथ साझा करूं। और ये जो जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी बातें आपको बता रहा हूँ जो आप नहीं जानते हैं, और या ऐसी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ जो आपको पता नहीं है। आपको सब पता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपसे बात करके मैं आपको एक कोई चीज़ जो मिसिंग हो रही है, मेरा पर्पस आपसे बात करने का सिर्फ यही है कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। जब आप पूरा प्रयास कर रहे हो, पूरी कोशिश, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट फॉर द एक्सीडेंट प्रिवेंशन, बट व्हाई एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग। सो उसमें जब आप इम्प्लीमेंटेशन साइड में होते हैं तो कुछ न कुछ एक छोटी सी चीज़ मिस हो जाती है। विद दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन द फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई कैरियर in the industrial safety aspects, so I thought I have to share something with you। और ये आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, और आपके लाइक और कमेंट किसी भी जो भी पॉडकास्ट और जो भी वीडियो बना रहा है उसको इनकरेज करते हैं। तो इनकरेज करेगा कौन? आप करेंगे। लेकिन साथ ही साथ कोरोना से डर के रहने की ज़रूरत है, अभी गया नहीं है। तो मास्क, जब भी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। धन्यवाद, नमस्कार। और आगे और भी इसी तरह के कुछ नए टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बता दूं, हमारा जो भी टॉपिक्स होता है वो आपको एक
ऐसे आप समझ लो कि बस कुछ आप मिसिंग कर रहे हो तो मत करो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। और यू आर द बेस्ट पर्सन हु आर लिसनिंग मी। थैंक यू, थैंक यू।